Hello guys, welcome back to the channel. So let's start with the analysis video for 26th of August 2023. So we are seeing that CBI would be going ahead with the investigation of the cases in Manipur. So these have been shifted to Assam by the Supreme Court again so that the investigation and all of that is not compromised and it is carried out in a free and fair manner. So the Chinese president, he wants both the countries, India and China, to handle the border issue properly. Obviously इंडिया भी यही चाहता है but again properly अब आपका क्या interpretation है of handling it properly varies. So we are seeing कि जो हमारा border issue है at LAC that has been long pending and it is not being resolved. So of late BRICS summit में we saw कि Indian Prime Minister and the Chinese President, they have agreed कि they'll be going ahead with the talks. So the China, they have requested for a structured bilateral meeting. And we're getting daily updates about the rover on the moon. So Pragyan, it traverses 8 meters in the moon. So it has traveled 8 meters on the lunar surface. So Pragyan rover. And again, daily basis पे we are getting the updates. So हमारे लिए important है अब क्या results actually निकल के आते हैं after proper, scientific analysis and the chemical reactions which are carried out on the lunar surface. So an update coming from the state of Punjab that the governor threatens president's rule amid face-off with the chief minister of the state. So as you go by the tone of this headline, governor has threatened the president's rule. So as per the constitution, again, this is somewhere political misuse of the powers that is being given to that are vested with the governor of a state. So amid an ongoing face-off, the Punjab governor, he shot off a letter to chief minister asking him to reply to his queries. So that's okay. So far it is good. Failing which, he said that he would send a report to the president about the failure of the constitutional mechanism in the state under Article 356. So Article 356 is about the president's rule, and this is one way कैसे किसी particular state में president's rule impose किया जा सकता है. So one reason is failure of constitutional mechanism, and if a report is sent about this by the governor to the president, तो उस case में president's rule applicable हो जाएगा. So governor also warned of initiating criminal proceedings under section 124 of the IPC. And he said he had received reports from various agencies regarding rampant drug abuse in Punjab. So that is there, but if we go by this article, to aisa lag raha hai, it is kind of a revenge that the governor of Punjab is talking about. So 28 feet Nataraj sculpture from Tamil Nadu to grace G20 venue in Delhi. So again, the importance of Nataraj, its relevance, its significance becomes important for us to know in detail. So this has been borrowed from Swami Malai in Tanjavur district of Tamil Nadu. And here in this right picture, you can see this is the wax model of the sculpture. So the historical significance of Nataraj is important. So we'll be finding about that. So we know definitely it is an important part of the Tamil Nadu's culture. Again, what is more important for us from the perspective of examination is again the significance of Nataraja. Coming to the editorial page, let's see the important topics of the day.
सो इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज जो हमारे माइंड में आती है व्हेन वी गो बाय दिस टर्म ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, दैट इज फाइनेंस कमीशन। सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा, हमारे माइंड में एफआरबीएम एक्ट आएगी, एंड we'll also talk about GST. So जो वहाँ पे भी issues हैं, GST would also be relevant to this thing. तो तीन major चीजें हैं. So again, it is talking about कि what changes are required, current challenges क्या हैं, so all of that. So let's go by this article. So we see कि holding together federation with a built-in unitary bias. So we talk about कि quasi-federal nature of India's democracy. So quasi-federal matlab some elements are federal in nature, but we have more of unitary bias. So Indian Constitution, it was a contextual product of centrifugal forces and vociferous tendencies in the run-up to the independence. So far we have completed 73 years, but even so, the emerging dynamics of India's fiscal federalism that needs some rethinking. So even how we can see the financial needs of the states, they are changing. Sorry. So that is one of the, reasons of, again, the reforms that needs to be thought upon and that needs to be implemented as far as the fiscal federalism is concerned. So we are having a multi-tier fiscal system which is following 73rd and 74th constitutional amendments. So these two amendments are related to the local bodies creation, the Panchayati Raj and the urban local bodies. And then we saw the abolition of the planning commission as well, and it was replaced with the Niti Aayog. Then we have the fiscal responsibility budget management act. With all the states, they are forced to fall in line with GST Act. So that's there. And GST Act se related jo challenge hai, that is about the GST compensation. So given this is one thing, we see equity as concern for the 16th finance body. So यहाँ पे as I was talking कि आपके mind में अब क्या क्या चीजें आनी चाहिए when you are going through this term, when you read this term. तो one was finance commission. So 16th finance commission के लिए क्या challenges हैं, किन चीजों के बारे में that needs to delve more upon, क्या और ज्यादा reforms required है. So equity is one of the concerns that needs to be focused upon. So when we talk about the equity thing, again, first is key. See, we are having this. Okay, wait, let's start from the beginning only. Otherwise, we'll break the link. So here we're talking about one of the studies that have been conducted on the convergence trajectory of per capita income of the 16 major states from the time period 1970 through 2020. So this is based on the Economic and Political Weekly Research Foundation data. And बेसिकली हम यहाँ बात करें कि 16 मेजर स्टेट्स हैं, उनका पर कैपिटा इनकम को स्टडी किया गया बिटवीन 1970 एंड 2020. सो जो रिजल्ट्स हैं वो शो कर रहे हैं कि देयर इज इंक्रीजिंगली डाइवर्जेंट ट्रेंड. मतलब यहाँ अगेन इनइक्वालिटी हमें इंक्रीज हो रही है, दैट इज इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम. तो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, या इवन एवरेज भी हम निकाले तो दैट वुड नॉट बी डूइंग जस्टिस टू द फिगर. सो स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू बहुत ज्यादा है. मतलब आप सिंपली बस ये समझ सकते हो कि जब हम ट्रेंड की बात करते हैं फ्रॉम 1970, तो पर कैपिटा इनकम ऑफ 16 मेजर स्टेट्स जिनको एनालाइज किया गया, दैट इज ऑन इंक्रीजिंगली डाइवर्जेंट ट्रेंड. मतलब दैट इज वी आर सीइंग कि इनइक्वालिटी हैज बीन इंक्रीजिंग. And secondly, when we talk about another indicator, so we talk about the United Nations Development Program methodology of calculating the Human Development Index across 15 states. वो भी कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि there is convergence during the post-reform period, the post-reform period after 1991. And इस केस में जो standard deviation है, the value has reduced. So instructively, the disaggregated picture since 2005 that spans the FRBM legislations, it came into the picture. It shows a declining rate of convergence with a high compound annual growth rate of minus 2.85%. So post 2005, we can say कि again, जो convergence rate था, that has been declining. Human development की context में we're talking here. So that is why equity, that should be an overarching concern for the 16th Finance Commission. So यहाँ पे हमने दो चीजें देख ली कि why equity needs to be under focus for the 16th Finance Commission. दो डेटा की हमने बात करी.
So हम horizontal distribution and vertical distribution की बात करते हैं. So this is in the context of tax devolution. So even Human Development Index, that also needs to be considered as one of the indicators on the basis of which decision लिया जाता है for horizontal distribution of tax devolution. So second, there's also a case for revisiting Article 246 and 7 schedule of the Constitution, जो division of powers की बात करता है, and it is, we can say, federal feature in the Indian Constitution, specifically 7th schedule. So first, India, it is no longer the one-party governance of the post-independence times, and it has become a truly multi-party system. So we are having a political sense में multi-party system that is functioning. So nature of polity, बात करें आप society, technology, demographic structure, and the development paradigm, that is significantly changed with time since independence. So that's why अब ये reason दे रहा है कि why again we need to revisit, we need to reform Article 246 and the 7th schedule. So first is that we are no longer one-party governance system. Secondly, under the changing dispensation, we are seeing several pieces of central legislation ऐसे हैं, like Mahatma Gandhi, like MG Narega Act, we have Right of Children to Free and Compulsory Education Act है, National Food Security Act is there, and many other. They are imposing extra burden on the states. So Tamil Nadu Chief Minister recently he raised the issue of shifting the education from the concurrent list to the state list. So एक ही demand raise की गई थी पहले state, it was education, it was a subject under the state list, usko baad mein shift kar diya gaya to the concurrent list, and again there is same demand ki this needs to be changed to the status quo jo pehle position thi. So education needs to be made a subject again under the state list only. So agar hum ye bole ki jitne bhi acts hain, these act like a burden on the states, so I don't agree with this. Again jo requirement hai har state mein, that is different. So we can't simply say कि this is a burden. But yes, changing dispensation, we are seeing जो ये acts है हमारे पास, since अब इनकी requirements भी different, it would be varying differently across different states. So that needs to be taken into account जब हम financial burden की बात करते हैं. Then thirdly, we talk about the time of constitution making. We never ask the pertinent question of who should do what and who should tax what. So एक ये बहुत important question है. So we borrowed copiously from the Government of India Act 1935, and we failed to apply the subsidiarity principle, जो कि है whatever could be done best at a particular level should be done at that level only and not at a higher level in the division of the functions and finances की जब हम बात करते हैं. So this is this subsidiarity principle. So although जो हमारे 73rd, 74th Constitutional Amendment Acts है, they have provided an opportunity to re-examine this issue, but nothing was done. And more confusion that was added when we saw introduction of Schedule 11 and 12. So Schedule 11 and 12 is also related to urban local bodies and the rural local bodies. So यहाँ पे basically जो subjects included है Schedule 11 और Schedule 12 में, these are those subjects जहाँ पे again the local bodies they can impose the taxes. But again major power कि कौन सा subject local bodies के अंदर रहेगा, that is in the hands of the state government. So they are lacking the operational meaning because of this reason. So thoda or more autonomy can be given to the Panchayati Raj bodies and municipalities, and एक ये area of reform है जहाँ पे again we need to focus. Then fourth point is again respectable place for third tier of governance level होना चाहिए. We're seeing persistent failure to place the third tier properly on the fiscal federal map of India. So that is a serious issue. जब हम financial devolution की बात करते हैं at the lowest level, at the third tier, तो वहाँ पे the situation is very, we can say very challenging. यहाँ पर बोल सकते हैं कि properly या ट्रांसपेरेंटली फाइनेंशियल डेवल्यूशन नहीं किया जाता है अप टू दैट लोवेस्ट लेवल. सो वहां पे फिस्कल चैलेंज इज एग्जिस्टिंग. एंड अगेन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली वी नीड मनी. सो अगेन लोकल लेवल पे वी आर नॉट हैविंग सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सस्टेनेबल एंड स्टेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर देम. सो अगेन इस चीज पे भी फोकस करना इम्पोर्टेंट है.
Then fifth point is about budget borrowing. So there's a great need to review of budget borrowings जो union and state governments adopt करती हैं and they are sticking to. So off budget borrowings का मतलब होता है कि जो भी borrowings हैं which are not provided for in the budget. So budget में जो borrowings mentioned नहीं हैं उनको हम बोलते हैं off budget borrowings. But again जिनकी repayment liabilities falls on the budget. So basically ये जितनी भी off budget borrowings हैं they remain unscrutinized and they are unreported, but still liability की हम बात करते हैं तो that falls on the budget. So जितनी भी income या expenditure transactions हैं that should fall under the some budget head or other. That is a universal principle. Again you can't escape it because off budget borrowings unscrutinized हैं unreported रहती हैं. तो again कहीं ना कहीं ये भी एक बोल सकते हैं this is a method of misusing the funds, or we can say that this is one of the loopholes that exist in our system. So this is all about this topic, and yes, this is one of the important topics. यहाँ पे separately different point formats में चीजें लिखी हैं कि किन किन चीजों पे हमारा focus होना चाहिए, so you can note them down in an objective manner if you're making notes. सो क्लीन टेक की अगर हम बात करें, क्लीन टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रीन फ्यूचर इन इंडिया. सो यहाँ पे क्या करने की जरूरत है? क्लीन टेक्नोलॉजी फर्स्टली क्या इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं एंड उनको अब हम कैसे और स्केल अप करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है. सो विल टॉक अबाउट दैट. सो स्पेसिफिकली रिमोट एरियाज में अगर हम बात करें तो रिसेंटली बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए इन द हिंटलैंड्स ऑफ इंडिया बाय इनेबलिंग एक्सेस टू द क्लीन टेक सॉल्यूशंस. चाहे आप लाइवलीहुड्स की बात करो फ्रॉम दी फॉर द रूरल पॉपुलेशन. So for instance, solar dryers की अगर हम बात करें, so converting throwaway tomatoes into sun-dried ones in Andhra Pradesh, या बात करो biomass powered cold storages helping the farmers in Maharashtra selling lemons make a gain that is 3 to 5 times that of the original price, या बात करो solar milk reeling machines which are reducing the drudgery for the thigh reelers and doubling their income in Odisha. So these are some of the 50,000 plus examples of how clean tech solutions are already contributing to jobs and incomes of rural women and men. So ये तीन examples यहाँ पे mentioned है कि कैसे micro level पे, local level पे हम clean tech solutions adopt कर रहे हैं and how they have proved to be successful. So again, ये तीन important points हो जाते हैं which will make your answer a little unique in nature. So you can note them down. And apart from this, सो मेजरली यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि हाउ क्लीन टेक सॉल्यूशंस को हम अडॉप्ट करके वी कैन प्रमोट जॉब्स एंड इनकम एट द लोकल लेवल. सो अगेन क्लीन टेक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो टॉकिंग मोर अबाउट रेन्यूएबल एनर्जी एंड अगेन how renewable energy can also help India in reducing the crude oil imports. That is also one of the possible benefits of it. Again, but सबसे पहले अब renewable energy की बात कर रहे हैं तो उसका adoption matter करता है. So steps to scale up these clean tech के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले वी कैन लेवरेज जो हमारे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं. अगेन हम यहाँ पे सिनर्जी की बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट इज लेवरेजिंग द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स व्हिच इज सपोर्टिंग लाइवलीहुड्स. फॉर एग्जांपल आप मुद्रा योजना की बात करें, सो दैट एक्सटेंड्स कोलेटरल फ्री लोन्स टू द माइक्रो एंटरप्राइजेस. सो दिस इज अ फीचर, दिस इज द एरिया फॉर व्हिच दिस मुद्रा स्कीम इज वर्किंग फॉर. सो इसको हम यूज कर सकते हैं टू इनेबल द अडॉप्शन ऑफ द क्लीन टेक सॉल्यूशंस. Similarly, we are having Pradhan Mantri formalization of the micro food processing enterprises scheme. So formalization of food processing industry ke liye we are having this scheme. So again, this also supports the adoption of technology among the micro food enterprises. So if it is supporting adoption of technology, so why not we can go for, promotion of clean tech in this area. Like again, solar dryers can be promoted, energy efficient multi-purpose food processors or solar grain mills. They can be promoted amongst these units. Then we have the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. उसको हम leverage कर सकते हैं towards adopting solar refrigerators and dryers for fishing communities. So Matsya Sampada Yojana is for the fishing community. So again, this clean tech can be promoted in this particular area.
Second, we can enable the large scale financing of the clean tech solution. So सबसे पहला पॉइंट जो हमने बात करी स्केल अप करने का वो था जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स हैं हम उनको कैसे लेवरेज कर सकते हैं, तो उसके हमने कम से कम 3-4 एग्जांपल्स देखे. सेकंड पॉइंट इज की फाइनेंसिंग की, जब हम बात करते हैं फाइनेंसिंग ऑफ क्लीन टेक सॉल्यूशंस, तो इसको इंश्योर करने के लिए now who will be coming forward matters. So it requires supporting the bankers' capacity as credit assessment for the clean tech because they have not come across such solutions and the associated cash flows before to make an informed assessment before giving funds. So we also need to hedge their risk also. जो banks funds lend कर रहे हैं, loan दे रहे हैं, तो again there is some risk associated with that. So उसको clean tech के through how we can hedge that risk और basically ensure कि वो risk थोड़ा और कम हो सके. So active engagement with the financiers, that is important to structure the loan products that are aligned with the cash flow scenarios of the users. So we can adopt some of the principles which help powering livelihoods, that is Wilgrow initiative to unlock 300 plus loans for the clean tech solutions to the women. So जो loans दिए जा रहे हैं for promotion of the clean tech, for more adoption of the clean tech, again, that needs to be done in a much more healthier, much more transparent and accountable manner जब हम loan assessment की बात कर रहे हैं. Thirdly is we can enable multi-actor partnerships between technology, innovators, manufacturers, distributors, and the service providers and financiers, and the market linkage players. तो यहाँ पे सारे stakeholders लिख दिए गए हैं to enable overall ecosystem. So multi-actor partnerships, we are basically talking about cooperation between multi-stakeholders. So अब जब हम manufacturers level पे बात करते हैं, so जो manufacturers हैं of clean tech, they need help bringing their products to the customers. So again, सब यहाँ पे हमें marketing की जरूरत होती है. तो challenges जो manufacturers को face करने पड़ते हैं, that is low product awareness, high customer acquisition cost. As users, they need to touch and feel these products before adoption, and we are seeing low density of customers for such products. So users as well at times, they struggle with limited after sales service and market linkage of the final processed products. So ये challenges हम address कर सकते हैं through this multi-actor partnerships or multi-actor cooperation. So इसीलिए we need a proper holistic ecosystem where distributors, they work with the manufacturers to enable technology access. So that's how they can help each other and make this system, make this ecosystem much more robust. So we are having massive ambitions for clean and green future. So that's how this can be one of the components of it. So clean tech for livelihoods and jobs, especially rural areas, we can make that green future inclusive. So इसी तरीके से कहीं ना कहीं आपके answers भी होने चाहिए. That objective, that can say forward looking and positively oriented. So less words में you have to write more, you have to speak up more, you have to put in more ideas, but again वो भी over नहीं हो जाना चाहिए. So Chandrayaan 3 के बारे में already have talked a lot कि South Pole पे हमने क्यों land कराया, why that is important, why the landing over there is challenging and very difficult, because India, we've become the first successful country to land over the polar surface of the moon. So ये हम already discuss कर चुके हैं, so that's why I'm not repeating this article again. So India and Greece ties, they pledged to upgrade the ties to become strategic partners. So again, यहाँ पे what are the advantages and which all areas are we working upon or we wish to work upon in the future. So two countries, they're set to conclude an agreement. सबसे पहला, we're working upon the migration mobility between two countries. So we'll be promoting obviously our cultural and academic exchanges between the education institutions and increase people to people contact besides boosting the defense links. So migration mobility, cultural and academic exchanges, and then defense partnership. So these are some of the focus areas. So Vladimir Putin is going to skip the G20 summit in New Delhi. Again, यहाँ पे भी हमारे लिए challenges that
Russia and China, they are on one side, and obviously other members are on the other side. So this is a challenge that we need to ensure that all are there on the same page. सो स्मार्ट सिटीज कॉन्टेस्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली अब आपको जब भी कोई क्वेश्चन आता है स्मार्ट सिटीज पे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर आइडिया ऑफ स्मार्ट सिटीज। जो पहले हम स्मार्ट सिटीज की बात करते थे, इज योर आइडिया द सेम या यू हैव समथिंग न्यू टू टॉक अबाउट। सो दिस इज फर्स्ट थिंग एंड हेयर we go by the facts. So Indore is the best city, Madhya Pradesh is the top state in the smart cities contest. So Tamil Nadu is second state, and Chandigarh recognized the best union territory. So this is as per the smart cities mission. The performance has been assessed. This is some of the factual data. So G20 ministers, they agreed to map global value chains and link them with the MSMEs. So MSMEs, a day or two before, we were talking about their importance to the Indian economy, because we see that 50% of the contribution to GDP is by the MSME sector. So यहाँ पे again जब हम women led development की बात करते हैं, तो how MSMEs they can play an important role and how they can also play an important role in terms of increasing the labor force participation rate of women. So कुछ areas हैं and कुछ schemes जो already we are having which are working, and और क्या किया जाना चाहिए. So these are some of the dimensions जिनके regarding आप सोच सकते हो. And again, India के लिए this is one of the important agendas at the G20 summit, when we're talking about mapping the global value chains and making India a part of those global chains. That is important. And linking them with MSMEs. So again, synergizing the things would give us benefits. So the keywords that have been used is that would be making the MSMEs or the entire economy, we can say, much more inclusive, sustainable, and shock proof. Second is the second annexure. It relates to MSMEs, including other emerging in the emerging economies, providing them trade related information. And third annexure is about the principles of digitalization of trade documents. So US Fed Reserve may need to raise the interest rates further to ensure inflation is contained. So this is coming from the chairman of their central bank, Fed Reserve, Jerome Powell. So they're not clear कि अभी जो current interest rates हैं they are high enough or not. तो clearly बोला गया है कि future में possibility जरूर हो सकती है. It definitely exists कि future में interest rates और ज़्यादा raise किए जा सकते हैं, क्योंकि again inflation को contain करना is the main priority. So उसके लिए obviously this is the only option to raise the interest rate in future, and this is going to make things much more complex in coming times. It is going to put pressure upon GDP growth, and again right now you know कि economic situation अगर हम globally बात करें, advanced economies की बात करें, तो it is not that strong, or it is not portraying that positive picture. So inflation तो एक अपना challenge है ही. अब interest rates आप कब तक उसको रेज करते जाओगे, कब आपको लगेगा कि हाईएस्ट लेवल आ चुका है एंड वी नीड टू रिड्यूस देम, या कुछ टाइम हाईएस्ट लेवल पे मेंटेन करेंगे या उसके बाद उसको रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे. बिकॉज अब यहाँ पे ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड जीडीपी ग्रोथ रेट जब हम रेजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं. Coming to Financial Express newspaper now, so finance minister says that central banks they should be cognizant of growth. तो यहाँ पे भी अगेन वही ट्रेड ऑफ है जो अभी मैं बात कर रही थी. फेड विल रेज द रेट्स इफ दैट इज नीडेड. सो बहुत क्लियर स्टेटमेंट आया है, एंड अगेन इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली शेयर मार्केट्स पे भी देखने को मिलेगा. So Adani probe, it is almost near complete, near completion.
So Adani probe is near complete. This has been updated by SEBI to the Supreme Court. So let's see finally क्या निकल के आएगा हमारे लिए, वो ज्यादा important है. And जो issue था, I hope you guys must be knowing about that, जो अडानी के ऊपर acquisitions and allegations लगाए गए थे by the Hindenburg Group regarding their stock manipulation and the accounting practices. So the probe is going on, and again, as I just said, key result or the outcome is going to be much more important for us. So what is the Indian story of growth? So we are seeing कि it is gaining a huge traction, but again आपको जो find out करने या पता होना चाहिए, that is हमारी story actually है क्या, कहाँ से हम निकल के आए हैं, क्या challenges हमने face किए, and उन challenges को हमने कैसे face किया, क्या policies के through हमने face किया. So that is the entire story is all about. अब उसको search करोगे proper chronological manner में how things changed globally भी, nationally भी, and how India came to the current position of being the 5th largest economy right now. So जो हमारे development goals हैं उनको fund करने के लिए we need around $4.5 trillion over a decade. So 10 years की आप बात कर रही है to finance our developmental goals. So basically here we were seeing कि B20 मीट हुई थी. So इसमें जो सजेशन निकल के आया कि अब क्या किया जाना चाहिए अगर हमें इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो एक सजेशन आया है कि वी कैन सेट अप द ग्लोबल एक्सेलरेशन फंड वेयर एवरी बिजनेस ग्लोबली इट विल कंट्रीब्यूट 0.2% ऑफ देयर प्रॉफिट टुवर्ड्स द सोशल डेवलपमेंटल गोल्स. तो इन अ वे जो CSR जिस तरीके से इट इज फंक्शनिंग इन इंडिया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कहीं ना कहीं उन्हीं लाइंस के ऊपर ग्लोबल एक्सेलरेशन फंड as a suggestion has been put up. So India's G20 Sherpa Amitabh Kant sir, he said कि जो geopolitical conflicts हुए, रशिया यूक्रेन वॉर की आप बात करो, they are best addressed by the UN. The G20 जो है, that is an economic body to promote global growth. So war leads to challenges, चाहे आप food, fuel, fertilizers की बात करें, inflation increase हुई है, and there is a huge implication in terms of economics. Then 5 to 10% of Africa, 60% की जो uncultivated land है, it can dramatically change the world's food chain. तो again इतने micro level पे अगर आपको clarity होगी, and if you going to reflect in this manner in your answers, कि आप इसको again use कर सकते हो as one of the potential areas which can be leveraged by India as far as India-Africa relationship is concerned. So future में क्या potential है, क्या और new areas हम explore कर सकते हैं, तो this is going to be one of the important areas. So simply you can write कि 60% of uncultivated land जो है Africa में, again that can be leveraged, and किस तरीके से वो globally help कर सकता है. Then another global issue is cybersecurity threats which are emerging. So ensuring a global standard of cybersecurity, that is going to be an important thing. And obviously that needs to be something which is easy to adopt and resilient framework hona chahiye. Then another important global topic is usage, application, and regulation of artificial intelligence. How we'll be approaching towards our goals using AI, how AI can help us. So again, responsible and ethical usage of artificial intelligence. So actions, they're needed at all the levels, चाहे national level की बात करो या global level की आप बात करो. So Jan-Dhan accounts में we are seeing steady rise in terms of accounts, but जो problem है, that is deposits are not increasing. So accounts, खाली accounts open कराना, account का number अगर increase हो रहा है, तो again हम बोल सकते हैं कि वो complete idea नहीं हम fulfill कर पा रहे हैं. अगर deposits increase,
होंगे साथ के साथ, तो that is something which is much more desirable and needed. Coming to Indian Express newspapers, so let's see the important topics that we have not covered up so far. So we'll just only take them up. So we have seen about this issue, the Punjab rope, we've seen the SEBI prop regarding the Adani group of firms, we've seen the rover on the moon moves 8 meters. Rate hike is not the best option to curb inflation. It can hurt the recovery as well. So this has been said by our finance minister. So again, जो ट्रेड ऑफ की मैंने बात करी एंड अगेन इन्फ्लेशन के बारे में भी हैव रेज दिस थिंग कि पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन के पीछे रीजन क्या है, व्हाट आर द कॉजेस दैट इज लीडिंग अप व्हिच इज ड्राइविंग अप द इन्फ्लेशन. सो इफ इट इज सप्लाई साइड, so उस केस में अगेन फिस्कल पॉलिसी वुड बी मच मोर डिजायरेबल, दैट इज गोइंग टू बी मच मोर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इंस्टेड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. एंड एट द सेम टाइम जब हम यहाँ ट्रेड ऑफ की बात कर रहे हैं तो किस लेवल तक आप रेट हाइक करोगे सो एज टू इंश्योर कि जो इवन लाइक कोविड-19 के बाद इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिली है दैट इज नॉट हर्टेड, या उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई लेवल पे रहते हैं तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के ऊपर डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं तो बोरोइंग कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस. सो दैट इज व्हाई इट इम्पैक्ट्स ग्रोथ इन अ नेगेटिव सेंस. So here we have all the details about the preparations going on for the G20 summit. There's also, we have seen the Smart Cities Awards. Madhya Pradesh is on the top. Indore is the best city for 6th year in a row. So state of Indian birds की अगर हम बात करें तो most species में we are seeing a dip in their numbers, and जो Indian peahowl है that is amongst few of the species that are still flourishing. So we see कि 217 ऐसी species हैं which are still stable या increase हो रहे हैं in their numbers, and 204 of the species which are declining. So again, the ratio is, we can say 1:1 in terms of increase and decline in the species of the birds. So raptors and migratory birds की बात करें, ducks की बात करें, so they have declined the most. So species such as feral, rock pigeon, all of these, Indian peahowl, they are doing well. जो बाकी कॉमन स्पीशीज हैं लाइक बाया वीवर, दे आर रिलेटिवली स्टेबल. तो एक्सप्लेन पेज पे अगेन दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट pages in the Indian Express. So revised NCA of how school education it would change. So framework makes study of Indian languages integral part of the school. So आप यहाँ पे इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, वो स्टिल कैसे
we are seeing या कैसे हमने ensure किया है कि they remain sustainable. And again, फिर another component is talking about allowing the students the freedom to choose from range of subjects across the streams. So this is going to be one of the major and the biggest changes. So national curriculum framework में कुछ revisions किए गए हैं and कुछ key proposals यहाँ पे mentioned हैं. So दो हम already discuss कर चुके हैं. Recommends teaching of 2 languages till the middle stage. Middle stage में students they are expected to study apart from languages, mathematics, art education, physical education, science है, social science है. Vocational education would also be a part, and environmental education again. This is going to play an important role. So framework, it also allows specific times and weights to all different subjects. So students के पास again the freedom of choice would be given to them. And it is also talking about holding the board exams twice in 1 year in 10th and 12th. So again, an important topic from economics, high inflation and the interest rates impact on investors and markets क्या देखने को मिला. तो again, यहाँ broader topic पे बात नहीं कर रहे हैं. We're just talking about impact of high inflation and interest rates as far as investors and markets, the share market or the capital market is concerned. Gold and real estate पे भी यहाँ पे बात की गई. So let's talk about this. So inflation outlook again. RBI में अभी जो recently monetary policy committee meeting हुई थी उसमें inflation expectations या forecast that has been revised up. So food prices pressure that exists, food inflation is on the high. So interest rates again, अभी just हमने आज जेरोम पोवेल की बात करी, US Fed की बात करी कि उनका बोलना ये है कि there is definitely a possibility कि आने वाले टाइम में interest rates को और increase किया जाएगा. So उसका कहीं ना कहीं direct impact हमें Indian monetary policy पे भी देखने को मिलता है. So if they are going ahead with the increase in the interest rates, so there is definitely clear possibility कि India में भी same चीज की जाएगी, and that too India में possibility और ज़्यादा increase हो जाती है क्योंकि last time हमने status को maintain किया, rates were kept unchanged. So मैंने आप लोगों को पहले explain किया है कि हम जब interest rate differential की बात करते हैं तो उसमें भी ज़्यादा difference नहीं हम रख सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इंडिया को negatively impact करेगा क्योंकि इन्वेस्टर्स का मेन जो मोटिव है, मेन फंडा ऑफ डिसाइडिंग कि आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, दैट इज सिंपली जहाँ पे उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो सिंपली वहीं इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ उनको हायर रिटर्न्स मिलेंगे वो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे. तो जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, अगर इंडिया में ऑब्वियसली अगर हम रेट चेंज नहीं कर रहे हैं, स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं, बट बाहर की एडवांस्ड इकोनॉमीज में हमें देखने को मिल रहा है कि वो अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स वुड मूव टू दोज मार्केट्स. सो दैट्स वाई हम ज्यादा टाइम तक यहाँ इस लेवल पे सस्टेन नहीं कर सकते हैं. सो ऑब्वियसली जो हमारे ऊपर प्रेशर है ऑफ इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट वो कहीं ना कहीं इस रीजन की वजह से भी इंक्रीज हो रहा है. सो इम्पैक्ट ऑन मार्केट्स अगेन, एफपीआई जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं सबसे ज्यादा वॉलेटाइल एंड जिसमें सबसे ज्यादा हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं. सो इम्पैक्ट ऑन मार्केट्स में भी हमें ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि एफपीआईज दे आर सेलिंग इन द इंडियन मार्केट्स एंड दे आर मूविंग टू द मार्केट्स जहाँ पे दे कंसिडर इंटरेस्ट रेट उनको ज्यादा मिल रहा है. तो इसकी वजह से अगेन रुपी के ऊपर भी प्रेशर होता है एंड अगेन दिस इज अनदर इम्पैक्ट. एंड जो सेंटिमेंट है ऑब्वियसली दैट गोज नेगेटिव. So minus statistics and science, C.R. Rao's life story encapsulated mathematics, power, and the beauty. So his contributions, they are very important. So all of that is mentioned. So isko again, isme we can't do that much of analysis, but just for that purpose, again, अगर हम Indian statistical system की बात करते हैं तो क्या reforms are required हैं, इसके बारे में आप search कर सकते हो apart from going through this article quickly. So as a proud Indian, C.R. Rao, he also nurtured statistics and science in his homeland as well. He founded the Indian Econometric Society and also he helped in establishing Indian Statistical Institute as a world-class research center.
So generations of Indian statisticians, they owe their careers to his pioneering institution building. तो न्यू डिस्कोर्स, जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अब हमें ये देखने को मिलता है कि जब हम क्लियरली बोलते हैं बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, तो ये जो डिस्टिंक्शन है या जो ये लाइन है, ये कहीं ना कहीं अब हमें ब्लर होती हुई दिखाई दे रही है इन मेनी सेंसेस. अब इसके बारे में यू कैन थिंक अबाउट एग्जांपल्स कि कैसे यू कैन जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. कल्चरल इश्यूज की आप बात करो तो दे डिस्टिंग्विश द ग्लोबल साउथ फ्रॉम द ग्लोबल नॉर्थ. So what are those cultural issues that becomes important? So here when we see that China is the world's second most powerful nation, yet the President Xi Jinping hai, he insisted at BRICS summit in Johannesburg that it would be a part of the developing world. So still China वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी है, नेशन है, बट स्टिल चाइना अपने आप को एज अ डेवलपिंग कंट्री ही देखता है. तो अगेन इसके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है चाइना के लिए, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट टर्मिंग इटसेल्फ टू बी अ डेवलप्ड कंट्री. So obviously that is the reality, the real reason behind China calling itself to be a developing country. So ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं, अगेन ब्रिक्स इज गोइंग टू बी वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जहाँ के वी कैन सी कि ग्लोबल साउथ के जो इंटरेस्ट है या ब्रिक्स कैन एक्ट एज अ वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ. दिस वी सॉ. एंड अगेन अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ डेवलप्ड नेशन. जब हमने बोला कि डेवलपिंग नेशन एंड डेवलप्ड नेशन के बीच में जो लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन है, ऑफ सेपरेशन है, ये जो डिफरेंसेस हैं, दे आर ब्लरिंग. सो एक्चुअली आप किस नेशन को बोलोगे कि इट इज अ डेवलप्ड नेशन, क्योंकि चाइना भी कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलपिंग वर्ल्ड ही मानता है, पार्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड मानता है. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना ये है कि इट डज नॉट हैव एनी डेफिनेशन फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में ही यहाँ कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि कंट्रीज के पास ये फ्रीडम होती है कि आप अपने आप को खुद टैग दोगे कि आप डेवलप्ड हो कि डेवलपिंग हो. तो इस कॉन्टेक्स्ट में डब्ल्यूटीओ कोई प्रॉपर डेफिनेशन की बात नहीं करता है कि किसको आप डेवलप बोलोगे, किसको आप डेवलपिंग कंट्री बोलोगे. तो मेंबर्स दे अनाउंस फॉर देमसेल्व्स, वो खुद डिसाइड करेंगे कि वो डेवलपिंग है या डेवलप्ड है. सो दैट्स वाई चाइना अपने आप को डेवलपिंग बोलता है, क्योंकि कुछ बेनिफिट्स हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा मिलते हैं कंपेयर टू द डेवलप्ड वंस. सो अगेन चाइना का मेन रीजन यही है. सो बहुत सारी ऐसी पुअर कंट्रीज हैं अफ्रीका में which have risen to become self-sufficient in several areas over the decades. And there was a time जब हम टर्की की बात करें, it used to be described as sick man of Europe. So although some may argue कि जो country that is receding to that status under Erdogan once again, with a per capita GDP जो है that is at $12,000 and impressive human development index performance, so it is better off than many of its neighbors today. Then on the other side, जब हम जर्मनी की इकोनॉमी की बात करें तो that is facing one of its worst phases, prompting some analysts to call Europe's best performing nation the new sick man of Europe. So earlier ये tag था with the Turkey, and now we can say कि कहीं ना कहीं Germany can be called so because it is going through one of the worst phases, चाहे आप economic performance की बात करें. So it was again, it started from the economy, the economic performance of Germany. We started saying कि is the eurozone headed towards recession or not. So ऐसे हमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करके कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि जर्मनी इज हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन. सो चाहे आप हाई इन्फ्लेशन रेट्स की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग and industrial production is also declining. So again, still the situation is somewhere around the same only. So अगर हम बात करें एक जनरल डेफिनेशन की, डेवलप्ड कंट्री जो है इट शुड हैव अ डेवलप्ड इकोनॉमी जहाँ पे रीजनेबली हाई जीडीपी हो, एडवांस्ड फिजिकल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन फंक्शन कर रहा हो, देयर इज गुड क्वालिटी लिविंग स्टैंडर्ड्स कॉल्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू जिसको मेजर करते हैं. सो सिंपली स्पीकिंग दैट्स हाउ वी कैन डिफाइन अ डेवलप्ड कंट्री, बट अगेन अब इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हो सकती है.
So चाहे आप countries like India, China की बात करो, which are competing with some of their developed counterparts, these on some of these parameters. And Latvia की बात करो with a total GDP of $30 billion, it is called developed country क्योंकि वहाँ पे we see कि 2 million strong population, it takes its per capita GDP to be $34,000, whereas India में we seeing more than 125 times bigger GDP है इंडिया की compared to Latvia, which is at $3.75 trillion. It would still be considered a developing country क्योंकि वहाँ पे जब आप बात कर रहे हो इंडिया में population is 1.4 billion, and that is why हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी लो लेवल की है $2,700, क्योंकि अब यहाँ पे हम सिंपली फिगर्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जीडीपी को डिवाइड करोगे विद द पॉपुलेशन। सो सिंस लतविया में जीडीपी ऑल्दो इंडिया से स्मॉल है बट वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है कंपेयर टू इंडिया, तो इसलिए उनकी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो इतना हाई नंबर आता है। और इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जीडीपी भी बहुत ज्यादा है, तो दोनों नंबर ज्यादा होने की वजह से जब हम उनको डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसलिए वो बहुत लो लेवल की आती है। तो अब ऐसे सिनेरियो में आप कैसे किसी कंट्री को डेवलप बोल सकते हो या डेवलपिंग कंट्री बोल सकते हो? सो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं इंडिया में जो इवन डेवलप्ड वर्ल्ड से भी काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली द कंफ्यूजन, एंड आप नहीं अच्छे से प्रॉपरली यू कांट clearly distinct between a developed country and a developing country in today's times. So that's how जब हम बोल रहे हैं कि जो lines है between developing and developed world वो blur हो रही है, तो that you can substantiate through this example of comparison between India and Latvia. And we're seeing new agendas like sustainable living की हम बात करते हैं, ecological balance, universal health care, that take precedence in the global discourse. So again ये कुछ ऐसे new agendas हैं which needs to be taken into account जब आप किसी कंट्री को डेवलप कंट्री बोलने की बात कर रहे हो कि क्या वो कंट्री इन लाइंस पे डज इट फॉल्स ऑन ऑल दीज लाइंस और नॉट। सो ये कुछ अगेन इस तरीके से ना यू नीड टू write in your answers also, substantiating, bringing different dimensions, and then using examples to substantiate your statements. So highly mutated COVID variant has been found, and but your numbers and they're still low. So this is an update coming from WHO official. Highly mutated, so new variant of COVID-19. So let's see how it performs and how even countries performs in tackling it. So here we have an interview of one of the Monetary Policy Committee's member. So he says कि don't favor the rate hikes at this point. And tightening since last year, that is still working. So again, उनका कहना भी है कि is not favoring the rate hikes. So again ये पूरा इस टॉपिक के ऊपर एक अलग ही डिबेट चल रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगेन ट्रेड ऑफ्स क्या हैं, क्या आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की भी बात कर सकते हो। सो सप्लाई साइड पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है जब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं, बिकॉज सप्लाई साइड रीजंस की वजह से ही हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। एंड आरबीआई ने ऑफ लेट इट इज मैंडेटेड द बैंक्स टू मेंटेन इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, जिसकी वजह से हमने देखा कि लिक्विडिटी it declined after a lot of gap of huge time. So this is their liquidity management, एक important criteria है, एक important again focus area है for RBI, because कहीं ना कहीं अगेन लिक्विडिटी का भी इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट होता है। एंड स्लो डाउन इन चाइना हमें देखने को मिल रहा है, तो चाइना में जो मॉनेटरी पॉलिसी है अगेन दैट इज एक्सपेंशनरी, क्योंकि वहां पे वी आर सीइंग कॉन्ट्रैक्शन इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर इकोनॉमी। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या जो चाइना में हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है उसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ के ऊपर कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं अगेन जिन एरियाज में हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस है ओवर चाइना, तो वहां पे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को जरूर मिल सकते हैं।
सो जब हम एक्सटर्नल डिमांड्स की बात कर रहे हैं, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, तो मेजरली हमारी जो डिमांड आती है दैट इज फ्रॉम रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। तो ये हमारे लिए एक्सपोर्ट्स के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड रिसेशनरी रिस्क इन दीज रीजन्स दे आर ऑल्सो बिगर सोर्स ऑफ वरी। तो अभी हमने जर्मनी की बात करी थी, यूरोजोन इज इट हेडिंग टूवर्ड्स रिसेशन और नॉट। तो अगेन ये कुछ कंसर्न्स हैं फॉर हमारे एक्सपोर्ट्स या डिमांड साइड, बट इम्पोर्ट्स के लिए अगेन वी आर डिपेंडेंट अपॉन चाइना। तो वहाँ पे अगेन वो कहीं ना कहीं अगेन चाइना को हेल्प कर सकता है जब हम इम्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो बिकॉज जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, तो दैट वुड आल्सो ड्राइव अप द प्रोडक्शन एक्टिविटी। बट अगेन वो एक कंट्री की वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट तो हमें चाइना में देखने को नहीं मिल सकता है, बट स्टिल अब इंडिया के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है। So that's all for today, and thank you so much for joining us in today's session. Do share your feedback, your learnings, and if any kind of doubt related to any topic. And do subscribe to our channel and keep watching.